Good morning and a very warm welcome to each and every one of you. Uh, I, Gaurav Kumar Dwivedi, again welcome you back in the science class today of standard 5th. Okay, so without any delay, since we have two more chapters, that is including this one. So let us start with the chapter. Okay, before that, once again, I'm going to say the same thing, that is, please take all the necessary precautions so that you as well as your family or even us, we remain free from any kind of danger which can be imposed by this COVID-19. Okay, so before starting this, I would like to brief you a little bit about what we have done in the last class. So if you remember, in the last class, what we have done, we have discussed different types of systems, organs. I told you how this entire system is made, that is your cells, tissues, organs, organ systems, and your entire body. And I also told you how these different systems are working all together in a coordinated manner for proper functioning of our body. Okay, so till muscular system we have discussed in the last class, and today we are going to start with the circulatory system, and thereby we will be going ahead with our chapter. Okay, so I hope, is that clear till there? All of you would have read, and I hope you all would have read little bit ahead further. As I told you, if you are going to read it, you will be having a much more clear understanding when I am going to tell you. Okay, or just after my class, please have a reading so that you have a much better understanding of it. Okay, so without any delay, let us start with it. Let me share the screen first, and there we go ahead. Okay, so if you remember, muscular system I told you, which allows movement of the body and helps us to carry out various kinds of activities, in which we also did the activity. I told you to just hold a biscuit in your hand and try to eat it without folding your hand, which is completely impossible. Okay, starting with the next one, that is, here it is, the circulatory system. Okay, now this role of circulatory system is to transport food, waste as well as gases. Now I'm going to explain you this thing, that is the circulatory system. Now see, what is the circulation? Okay, if you remember, circulate, okay, the pump or the if you have aquarium in your home, ठीक है, तो क्या क्या होता है वहाँ पे, जो pumps होते हैं वो क्या करते हैं, water को circulate करते रहते हैं. Okay, so in that same way process, the circulation occurs inside our body as well. Okay, and this circulation helps us. ठीक है, जैसे अगर आप एग्जांपल लें तो खाना आप कहाँ रखते हो, मुंह में रखते हो. ठीक है, वो वहाँ से कहाँ जाता है, फूड पाइप, फिर स्टमक में आपका चला जाता है. तो खाना कहाँ गया, स्टमक में गया. लेकिन क्या ऐसा है कि खाली स्टमक को ही खाना चाहिए? ऐसा तो है नहीं. ठीक है, हमारे ब्रेन को भी खाना चाहिए, आइज को भी चाहिए, ईयर्स को भी चाहिए, हैंड, लेग्स एंड एवरी बॉडी पार्ट रिक्वायर्स द फूड आइटम्स विच वी आर ईटिंग. So what happens, since we cannot provide the food to each and every organs of our body, is that clear? It is not possible for us to provide each and every organs the food items. आप हाथ पे हाथ रख, आप अपने हाथ पे फूड रख लो और आप बोल दो कि खाना खा लो, तो नहीं हो सकता है, नहीं, not possible. Okay, in the same way, दिस सर्कुलेशन प्रोसेस इज नेसेसरी. और ये सर्कुलेशन कौन करता है? ब्लड करता है. यही खाली एक ऐसा है, ठीक है, जो कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ को आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, वेदर इट इज़ योर फूड और इट इज़ द वेस्ट मटेरियल और इट इज़ द गैसेस. ठीक है, बहुत कॉमन छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट सो दैट यू कैन हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज. ओके, नाउ सी, व्हेनेवर वी आर ईटिंग द फूड, जो भी खाना हम लोग खाते हैं, तो इट गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर स्टमक, दैट इज इन आवर इंटेस्टाइन. बेसिकली द फाइनल डाइजेशन अकर्स इन द इंटेस्टाइन, and from the intestine the food gets digested, and it all the nutrients which are present in the food, जो आपने हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, वाटर एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जो भी हम खा रहे हैं, all these things they get absorbed from the small intestine after digestion by the blood and they mix into the blood. ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको हम विलाई बोलते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देते हैं. एंड व्हेन ब्लड कीप ऑन फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, ब्लड जहाँ जहाँ जाता है वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ वहाँ भी डायरेक्ट कर दिए जाते हैं, या फिर हर एक बॉडी पार्ट्स को पहुँचा दिए जाते हैं वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. इज दैट क्लियर? इन द सेम वे ऑक्सीजन ऑल्सो, ऑक्सीजन हम खाली नाक से ले रहे हैं, लेकिन लिविंग तो सारे ही बॉडी पार्ट्स हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए.
तो वो कैसे मिलेगा, वो भी ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेंगे, लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर एक क्या होता है, ठीक है, ब्लड का एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और ब्लड में ही मिक्स कर देगा और ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में हमारे वो ऑक्सीजन सर्कुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, वेदर इट इज द गैसेस और द वेस्ट मटेरियल्स और एनीथिंग, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट अ वेस्ट फॉर आवर बॉडी, इसीलिए हम उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है, हम उसको अंदर नहीं रखते हैं। तो वो भी कहाँ से आता है, ब्लड के थ्रू ही मिक्स होकर के आता है। So I hope this much is clear for each and everyone in order to make you understand this circulatory system. Okay, moving ahead with the next one, let us see. Before going ahead, let me share you the screen first. Okay, circulatory, the nervous system, it controls the functioning of all organs, regulates behavior and everything. Okay, nervous system, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कंप्यूटर का एग्जांपल दे करके समझाया था। ओके, इन द केस ऑफ कंप्यूटर, योर सीपीयू, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वो जैसा जैसा डायरेक्ट करता है, आप लोग उसी हिसाब से, या पूरा का पूरा सिस्टम उसी तरीके से बिहेव करता है। इन द सेम वे आवर नर्वस सिस्टम ऑल्सो, सिंस दिस नर्वस सिस्टम इज व्हाट, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। यहाँ से ही सारी चीजें होती हैं, वेदर इट इज आवर थिंकिंग प्रोसेस और मूवमेंट और सर्कुलेशन और एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय आवर ब्रेन्स ओनली, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द नर्वस सिस्टम। ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, दैट इज वी हैव हियर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, that is removal of the waste from the body, and the reproductive system. Okay, let me tell you together both these things. Okay, when we are talking about the excretory system, so excrete, ठीक है, excrete का मतलब ही होता है बाहर कर देना। Okay, so excretion is what, it is the process by which waste materials are thrown out of our body. अब देखिए ये waste materials क्या होते हैं और कैसे thrown out किए जाते हैं, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जैसे मैंने आपको सबका ब्रीफिंग किया है, इसका भी मैं आपको ब्रीफिंग करूंगा। ओके, सो बेसिकली दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज देयर, वेस्ट को निकालना है। बेसिकली हमें वेस्ट के लिए ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत होती है, नहीं तो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। ओके, सो बेसिकली द वेस्ट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज योर सॉलिड वेस्ट, liquid waste and your gaseous waste. Okay, solid, liquid and your gaseous waste. Solid waste in the form of undigested food, ठीक है, आप सुबह उठते ही वॉशरूम जाते हो, ठीक है, जितना भी रात भर का खाना अनडाइजेस्टेड होता है, दैट एंटायर अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट ऑफ योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। ओके, मूविंग अहेड टू द लिक्विड, यूरिन, okay, urination, okay, again you go to washroom, okay, from time to time after drinking waters, so that is nothing but known as the process which is known as for eliminating urine, that is आप bathroom करने जब जाते हो, okay, toilet जब जाते हैं, so this is what basically, this is also nothing but a liquid waste which is excreted from our body, and at the same time the one more is there, that is your sweat, जो आपको पसीना निकलता है, this is also one of the liquid waste only which is coming out. Gaseous waste, when we are talking about, so basically we are talking about the carbon dioxide gas which is coming out, as well as some other gases are also there. Okay, so this was all about the excretory system. Reproductive system, always remember, ये अभी ऊपर के जितने भी हमने systems पढ़े हैं, these are the most important one, and without them the survival is not possible. ठीक है, मतलब जितने भी हमने पढ़े, ठीक है, आपके digestive system, circulatory, respiratory, ठीक है, ये excretory, अगर इसमें से एक भी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, सो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बट दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यू कैन से नॉट नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है हायर क्लासेस में कि इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ओके, सर्वाइवल का बेसिकली मीनिंग होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, नो, इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज जस्ट फॉर मेंटेनिंग आवर स्पीशीज, फॉर कंटिन्यूइंग आवर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। जैसे ये क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्शन खाली एक हमारी ह्यूमन स्पीशीज को बचाने के लिए और जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन करने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस मूव अहेड विद द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, that is the skeletal system. Okay, in the case of this skeletal system, what we are going to study here,
a little later. First let me describe you this diagram. If you can see this diagram, this is the entire skeletal system which is present inside our body. Okay, so the basic upper part, which is known as the skull, here it is the shoulder bone where your arms are getting connected to your shoulders. Okay, upper arm, lower arms. Okay, and these upper arm and the lower arms, they are joined together at this region which is known as एल्बो. ठीक है, ये रीजन क्या है, एल्बो है, जहाँ पे आपका अपर आर्म और लोअर आर्म आकर के आपस में जुड़ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव द रिब केज. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिब केज, आई एम टेलिंग यू एन एक्टिविटी to do this thing. Place your hands a little bit on the left hand side of your just below your underarms. Okay, keep your fingers here and try to press it. Okay, in this way. Okay, you will be able to see that 2 to 3 bones you will be able to see kind of ribs. They are basically your rib cage. Okay, next moving ahead, we have the lower arms, hip bone, where basically our bumps are there. Next we have the hand bones, or wrist bones are also there. Next we have the thigh bones. Now see, this is your upper leg, this is the lower leg. Okay, the thigh bone, this is known as your femur, and femur is the longest bone which is present inside our body. Upper bone and the lower bones of the leg, they are joined together at the knee region. तो ये याद रखिएगा आप लोग कि upper hand and the lower hand are joined together at elbow, whereas the upper leg and lower leg, they are joined together at this knee region, knee. Okay, now let us start with this skeletal system. Okay, so the skeletal system is the framework of bones in our body. Okay, the human skeleton consists of skull, backbone, rib cage and limbs. Limbs, we call it basically the hand and the legs. This entire hand portion as well as this entire leg portion is known as the limbs here. Okay, it provides shape and structure to our body and also protects the internal organs. When a baby is born, it has about 300 bones. Many of these bones fuse together. This I have already told you, if you remember. Okay, that is when the baby is born, it has around 300 bones, but slowly and gradually as the baby matures or it grows up, okay, the bones, they get fused together and the number of bones gets reduced to 206 bones. Okay, and next is this middle part, that is it provides shape and structure as well as protects the internal organs. So here basically, if you remember, I told you कि अगर कपड़े पे हैंगर पे कपड़ा टांगना, इज दैट क्लियर? ठीक है, हैंगर पे जब आप कपड़ा टांगते हो तो व्हाट इज दैट? दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग योर क्लोथ्स. ओके, वो एकदम से पास में आकर के, ठीक है, कपड़ा आपका रिंकल हो करके, या फिर it is not in a proper shape of your shirt or pant or anything. Okay, but if you put the same shirt in a hanger, ठीक है, आप हैंगर में लगा के फिर आप किसी उसमें हैंगर में टांगिए, so that gives a proper shape to it. ठीक है, तो इसी तरीके से without skeleton our body also would represent a cloth which is there on the hanger of your room or the wardrobe. ठीक है, बिना skeleton के हमारी बॉडी भी क्या रहेगी, एक कपड़े पे हैंगर पे कपड़ा टंगा हुआ की जैसे स्थिति रहती है वैसे ही रहेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स. ये मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है. आई टोल्ड यू द हार्ट एंड द ब्रेन, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ओके, सॉरी, द लंग्स एंड द ब्रेन्स, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो अगर डैमेज हुए तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रुक जाएगा. इनके बिना आप नहीं चल सकते हो, और सारी चीज़ों के बिना थोड़े दिन, कुछ देर, घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10 महीने आप सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट दीज टू नो. दैट इज वाई दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद सम एक्स्ट्रा protection, that is in the form of a skull and the rib cage. Okay, now let us move ahead. Okay, so starting with this skull region, the skull has 22 bones. The upper part is hard, consists of 8 bones. It encloses and protects the brain like a helmet. The face region is made of 14 bones. Of these, only the lower jaw can move. This enables us to speak and eat. Okay, now see how to make you understand this thing. See here, our skull, that is this entire part. ठीक है, फर्स्ट आप ये भी इमेजिन करो, ठीक है, इसको हार्ड क्यों बनाया गया? पहला प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था. जैसे आप कभी कभी देखते हो कि कुछ जैसे सिंघम मूवीज में, ठीक है, आप क्या देखते हो कि
अजय देवगन क्या कहता है, आता माजी से टकली, सो व्हाट इज दैट, ठीक है, यहाँ पे हार्ड है तब बोल सक रहा है, ठीक है, आप आंख में बोल करके देखिए आता माजी से टकली, ठीक है, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज हाउ सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इज देयर, ठीक है। या फिर आप कभी कभी देखते हो कि आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि ठीक है मैं सीना ठोक करके कहता हूँ, तो सीना क्यों ठोक ले रहे हो, क्योंकि रिब केज प्रेजेंट है, आप जान रहे हो कि हाँ वो डैमेज नहीं हो पाएगा हमारा इंटरनल ऑर्गन, इसलिए हम आथा माजी से टकली या फिर सीना ठोक के बोल सकते हैं, ठीक है। बट इफ यू ट्राई फॉर सम अदर पार्ट्स यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ओके, now starting with this, that entire skull region is made up of 22 bones are there, and out of that 22 the upper one is made up of 8 bones. Okay, if you can see here, yes, the upper one is made up of hard and it is consist of 8 bones, whereas the lower one is made up of 14. All together we have the 22 bones, 14 plus 8. Now see, basically our entire mouth region is divided, our skull only contains the mouth also, that is still here you have the skull region. Okay, this mouth is made up of two jaws, the upper jaw and the lower jaw. Okay, and out of this upper and the lower jaw, only this lower jaw is movable, ठीक है। कैसे आप करोगे इसको देखिए, आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, you just open your mouth, so what is happening, your this part is going down, if you try to observe it, open your mouth just okay, so this remains here only, but this part goes down. In the same way, while eating or while speaking, in all the cases your lower jaw is only movable, the upper jaw is completely fixed to the skull region. Is that clear? So this is also one of the questions which can be asked, important questions, that which jaw is movable, lower jaw or the upper jaw. Okay, next let us move ahead. So here we have the backbone. Okay, when we are talking about the backbone, so the skull is attached to the backbone. The backbone is made up of 33 small butterfly shaped bones called the vertebrae, supports our body and protects the spinal cord. The backbone is also called the vertebral column or the spine. Okay, now see here, this is the structure of the entire backbone. Okay, if you can see, these are the lines which you are able to see, which are coming out. These are the butterfly like bones, which are 33 in numbers. Okay, made up of 33 small butterfly shaped bones, which is known as your vertebrae. Okay, and this entire is known as your vertebral column, ठीक है, या फिर हम इसको स्पाइन भी बोलते हैं। ओके, नाउ दिस बैकबोन सपोर्ट्स आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड अगर आप बेसिकली, अगर आपको याद हो यहाँ पे जब आपने देखा, ओके, दिस मिडल पार्ट, ओके, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच यू आर एबल टू सी, दैट इज द मेन पार्ट, सो दैट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम अदर इंजरीज और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वी हैव the rib cage. When we are talking about the rib cage, so the rib cage are 12 in number, ठीक है। अब the ribs are attached to the spine at the back and to the breastbone in the front. The lowest two pairs are attached, which are known as the floating ribs. The rib cage encloses the heart and lungs and protects them from injury. This part I have already explained you. Now this 12 pairs, ठीक है, पहले pairs का मतलब समझिए, pairs मतलब होते हैं जोड़े, जैसे आपके जूते के pairs होते हैं, आप अकेला जूता कभी नहीं पहनते हो, ठीक है, जूते, चप्पल्स, nose, eyes, ears, they are always in pairs only, ठीक है। I'm not talking about the handicaps, I'm talking about the normal persons. Is that clear? So this is the meaning of pairs. Okay, now we have here what we discussed here, we have basically 12 pairs of your curved bones which are known as ribs, and I told you how you can just try to identify it. Okay, just touch at the side of your chest, okay, you'll be able to feel it and you can just have a much more clear understanding what is your rib cage is there. Okay, next if you remember here only, in the case of marasmus, ठीक है, अगर आपको याद हो जब हमने क्वाशियोर या डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में पढ़ा था, सो देयर इफ यू रिमेंबर, जो लोग बहुत ही पतले होते हैं तो उनकी क्या रहती है, पूरी की पूरी हड्डियां दिखती रहती हैं। सो द बोन्स व्हिच यू आर एबल टू सी ऑन द चेस्ट रीजन, दे आर नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग योर रिब केज ओनली। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड, ओके, लेट अस काउंट वेदर दे आर एक्चुअली 12 और इट इज नॉट लाइक दिस। ओके, लेट अस सी हियर, दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर रिब केज। ओके, let us try to count this. So starting from the first one, we will be counting this on one side only, then we will be multiplying it by
2, or just try to see here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Is that clear? So 10 is there in the front and 2 are floating. If you can see, this is present at the back part, okay, and this one also, the smaller one and the one which is present above it, that is these two are the last pair, that is the 11th pair and the 12th pair, okay. So till 10 here they are completely circular, rounded in structures, whereas the 11th and the 12th pairs, they are floating here, okay. Next, moving ahead here, the limbs, the arms and the legs, they are known as the limbs. If you remember, I told you, if you can see, these are the arm bones and these are the leg bones, okay. Both of them collectively, they are known as the limbs. Now these arms are attached to the shoulder bones. This I have shown you, okay. See here, the arms are attached to the shoulder bones here also shoulder bones, okay. And at the same time, the upper arm has one long bone which is known as humerus, and the lower arm has two bones. The upper arm joins the lower one at elbow. I told you already, many small bones make up the wrist and the hand, okay. Now see, the lower arm has two bones, okay. This one, if you can see, two bones are there, okay, and the upper one has only one bones which is known as humerus, okay. Lower one has two bones, and here we have a lot number of bones are there which are joined together, okay. Now if we move ahead, मैं आपको कैसे इस चीज़ को समझा सकता हूँ या फिर आपको कैसे समझाऊँ कि आपकी दो, where are your two bones basically, okay. Okay, see here, I'm trying to show, I'm not sure whether you're pretty sure whether you are able to get or not. Just put your hands in this way, okay. आप सीधा पकड़ लीजिए अपने हाथ को, or just do it in this way, okay, and put your wrist so that it becomes quite tight, okay, and then try to see this region, okay, this part, okay. So in this case, what you are able to find, just turn your hand in this way, you will be able to find two bones, one at the bottom and one at the top, okay, in this way. One is here and the another one is here. Please try to do this activity, you will be able to get both the bones which are present in your hand, okay. Next, if we move ahead, so we have the legs here, okay. In the same way, the thigh bone or the femur, this is the longest bone which is attached to the hip bones. Now see here, this is the thigh bone which is attached to the hip bone. If you can see here, it is connected, okay, and this thigh bone, it is the longest bone in the body. The lower leg has also two bones. The upper leg meets the lower leg at the knee. Many small bones make up the ankle, foot and toes, okay. This part is known as your T, where your lower leg and the upper leg, they meet and they form the entire leg, okay. Moving ahead to the, when we are talking about this ankle region or foot region, so this is made up of many smaller bones which are fused together. Now let me tell you that these two bones which you are talking about, or these two bones which are present here also, in this also you can do that same activity. If you remember, I told you, okay, just like you did it in your hand, just try to hold with your hand the region which is below the knee region, okay. Just in the lower leg, just below the knee, just put your hand there and clearly you will be able to see both the bones, one very hard at the in the front and one at the lower region, okay. Just try to do this activity and see, you will be able to see both the things together, okay. Again, let us move ahead to the functions of the skeleton. Most of them we have already discussed. The skeleton gives shape, support and strength to the body, okay. This we have already discussed. Shape, I told you. Support, so that all the organs and everything, they remain at a proper position, and strength, so that we can carry out our various functions or activities. The skeleton protects the delicate organs. Again, I told you, brain, heart and the lungs. Next, now see here, heart has also been shown, okay. Two I have told you, that is the brain and the lungs. If your brain is not working, your entire body will not work, okay. In the same way, जैसे किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, आप देखते हो ना कि सर पे चोट लगी और ब्रेन हैमरेज हो गया, सो पर्सन कहाँ चला जाता है, कोमा में चला जाता है, बिकॉज क्यों, यही कंट्रोल सेंटर है और यही गड़बड़ हो जाता है, तो क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है. लंग्स, आई टोल्ड यू, ऑक्सीजन एक भी सेकेंड के लिए, एक भी मिनट के लिए नहीं मिला तो हम
नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. ओके, लंग्स, हार्ट हैज ऑल्सो बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन. अब देखिए, इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स, अभी तो हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, 300 बेबी में, ठीक है, 206 मैच्योर के केस में. If you talk about the cells, millions of cells are present or billions of cells are present inside our body. हम नहीं जानते हैं what is the exact number of these cells. और इतने सारे cells हैं तो सबको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ही. Okay, they all need nutrients and everything. Okay, so this heart, I just now told you, this performs circulatory system. अभी मैंने आपको बताया. So in the circulatory system, the function of circulation is carried out by this heart only. Okay, so since the circulation is being carried out by the heart, so if the food is not able to reach to each and every parts of the body, they will stop working or they will start getting damaged. और कोई भी body organ अगर काम करना बंद कर देगा, so you will start facing problems, and at the same time it will also help in deteriorating other organs as well. ठीक है, अगर फूड या न्यूट्रिएंट्स हमें मिलना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे एंड फाइनली वी विल डाई. और यही होता है शुगर के पेशेंट्स में. जितने भी शुगर के पेशेंट्स होते हैं, आप क्या देखते हो कि सबसे पहले उनकी किडनी डैमेज होती है. ठीक है, वाई? बिकॉज किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ठीक है, वो फिल्टर करती है ब्लड को, वेस्ट बाहर निकालती है. तो वेस्ट निकलना बंद हो गया क्योंकि किडनी नहीं काम करता, इसीलिए आप डायलिसिस करवाते हो. ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, ठीक है, अगर आपका वेस्ट बॉडी के अंदर ही रह जा रहा है तो वो वेस्ट क्या करता है, बाकी सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से आपका लिवर, पैनक्रियाज, फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगते हैं एंड फाइनली द पर्सन डाइज. ओके, इफ proper attention is not given or proper care is not taken by the patients. Okay, moving ahead with this part. Okay, the long bones such as the bones in the arms and legs are hollow and are filled with a soft jelly like substance called bone marrow. The blood cells of our body are made in the bone marrow. अब देखिए, ये बहुत ही important part है. Okay, why it is the most important part? Let me tell you. क्योंकि होता क्या है कि this bone marrow, okay, which is basically the region present is the hollow region which is present inside our bones. That is जो long bones हैं हमारे, ठीक है, legs में और arms में, that is here as well as your thighs. Okay, they are basically hollow. Okay, and since they are hollow, so they are filled with jelly like substance which is known as bone marrow. ठीक है, and this bone marrow is responsible for production of new red blood cells or for the production of your blood cells basically. Okay, मतलब आपके blood का production कहाँ पे होता है, bone marrow से होता है. Is that clear? So अगर blood का production रुक जाएगा तो circulation बंद तो सब कुछ काम करना बंद. Is that clear? So that is why this is the most important part, and this is going to be a revolution in the medical science very soon. ठीक है, बहुत सारे रिसर्च इस पे स्टार्ट हो चुके हैं, but still this is going to be proving a boon for us, because अगर बोन मैरो को हम एक्सट्रैक्ट कर लिए या फिर हम वहाँ से मतलब सेल्स ले लिए, ओके, सो वी विल बी एबल टू ट्रीट कैंसर्स एंड एवरीथिंग एज वेल. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. ओके, आई होप द नेक्स्ट टॉपिक इज योर जॉइंट्स, but we will not be able to do the joints today, so we'll be doing the joints tomorrow in the next class. Okay, so till then I hope you're going to follow my instructions, and please, I request you, I instruct you to please have a reading of this part which I have just now explained you. Okay, so that you'll be able to understand in a much more better way. ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप लोग अभी इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो. Is that clear? So this was all for today. Thanks a lot for being with me, and till the next class, please stay safe and stay healthy and take all the necessary precautions which are required to keep yourself safe from COVID-19. Okay, so that's all for today. Thank you and have a superb day ahead.